Hello everyone, welcome to PTE Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 36th video in this series, which means that we have already discussed 35 highly repetitive and real exam questions. And if you are going to follow our strategies and tips, then the results are guaranteed. चाहे आपका target score 84 हो, 66 हो, or even if it's 46, right? You will be able to achieve your target score अगर आप हमारी strategies को follow करते हैं. First things first, that now PTE is accepted for UK visas and immigration. So if you want to study, work, or settle in UK, you can achieve your dream through PTE. And 90% of Canadian universities accept PTE academic, and a naya test which is PTE Home has been started, which is valid for family visa in the UK. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now students often ask क्या हम भी स्कोर कर सकते हैं? अब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है. 84 अगर आपका टारगेट स्कोर है and between 90. So the answer is yes, you can also achieve your target score. Do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. First of all, PT reading integrated section hota hai. So you have 32 to 41 minutes and it is not scored out of 90, right? It's real scoring we are going to see in the due course. And it has 5 question types and the second last question type is reading filling the blanks, जो कि हमारे आज वीडियो का topic है. And coming to the real scoring, okay? So the real scoring is PT reading module is of 47 marks only. एंड उसमें से रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं 15 मार्क्स. So if you have 5 reading filling the blanks questions and they will be then of 3 marks each and कितने questions आते हैं 4 to 5 reading filling the blanks. So what is our strategy? First of all, you have to spend a maximum of 2 to 2.5 minutes to solve your reading filling the blanks. अब इस 2.5 minutes में क्या आप सारे questions को read कर सकते हो? The answer is no. What you have to do the skimming karoge, easy rahega. And we teach these techniques to our students who take coaching from us in institute or online. And this is today's blank. As usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this and then we are going to discuss it. Okay, so you know that the first thing we do is skimming to understand its tone, gist, right? And then tenses and then parts of speech of the options. Okay, so tone means positive tone hai, negative hai, neutral hai और academic tone hai. Gist किस बारे में central theme या idea कौन सा है. Tense past tense use हो रहा है, present हो रहा है या future tense. And parts of speech for the ऑप्शंस. ओके, जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की ऑप्शन दी हुई है बहुत बार हम उसी के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं अपने आंसर्स को कि हमें एडजेक्टिव्स फिल करने हैं, नाउन्स फिल करने हैं या वर्ब्स फिल करने हैं. ओके, so let's get started. An exhibit that brings together for the first something landscapes painted by British impressionist Pierre Auguste Renoir to the National Something of Canada this June. Okay, this gallery in Ottawa worked with National Gallery of London and Philadelphia Museum of Art to something together. The collection of 60 Renoir something from 45 public and private collections. Okay, so you have to see now what you have to fill. Okay, first of all, अगर आप इसमें देखिए तो इस word की pronunciation, this is a French name, right? We are not, first of all, proper noun है, right? तो अब आप कैसे पता चल रहा है अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे first letter capital है, so you know that first letter तभी capital होता है when something is proper noun. Okay, and proper nouns की pronunciation PT consider नहीं करता है. Even I am also not a perfect speaker of French, right? But इसको कैसे pronounce कर सकते हो आप? PI
ऑगस्ट रेनुआ, ओके। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी प्रोनाउंस करिए, राइट। अगर स्पीकिंग में कभी प्रॉपर नाउन्स आते हैं, पीटी उनकी प्रोनाउंसिएशंस को रिगार्ड नहीं करता है, स्कोर नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है, किसी पेंटर की बात हो रही है, उसकी कोई एग्जीबिशन की बात हो रही है, ओके। नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, गैलरी क्या है आपका, एक तरह से नाउन है। स्टेट, राइट, स्टेट क्या है, नाउन है। टाइम, अगेन इट कैन बी नाउन। पेंटिंग्स, नाउन है और प्लूरल है। कम्स, राइट, नाउन है और सिंगुलर है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ही कम्स, हम ऐसे ही कहते हैं ना, राइट, या दे कम, ओके, राइट। रेंडर्स, रेंडर क्या है, एक वर्ब है। मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज परफॉर्म करते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर कोई चीज बनाते हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेंडर कर रहे हो। सो दिस इज योर वर्ब। पुट क्या है, वर्ब है। पुल क्या है, वर्ब है, ओके। सो मोस्टली इसमें आपके नाउन्स या वर्ब दिए हुए हैं, राइट। अब टाइम, टाइम आपका नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, ओके। लेट्स सी द आंसर्स नाउ। So an exhibit that brings together for the first something landscapes painted by. Landscapes means over here paintings. So landscapes and paintings are the contextual synonym words, okay? जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड, सो इजी रहता है आपको समझना। तो लैंडस्केप मीन्स बेसिकली पेंटिंग्स। अब फॉर द फर्स्ट, बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली ये एक फ्रेज है, राइट। पहली बार जब हम कहते हैं, पहली बार मतलब टाइम, ओके। सो बहुत सिंपली हमने यूज किया, एंड टाइम यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। अब एक चीज जो यहाँ पे ग्रामर का रूल है, विच आई वॉन्ट टू टेल, इज दिस फर्स्ट टाइम, राइट, लैंडस्केप्स। तो अब आपका लैंडस्केप्स क्या है, नाउन है बेसिकली। अब फर्स्ट टाइम क्या है, मीन्स आपका यहाँ पे हाइफन क्यों यूज होगा। फर्स्ट टाइम आपका क्या है, पहली बार इज योर एडजेक्टिव, and this is our rule whenever there are more than two words. When we are using it as a single adjective, we have to put hyphen, okay. So this is an important rule which you should remember, especially if your target score is 66 or 84, okay. Now we have selected time, and now let's see what we are going to put over here. Something to the national of Canada, okay. अब यहाँ पे समथिंग टू द क्या होता है, जनरली लेकर आए, राइट। जो पहली बार है, पहली बार जो पेंटिंग्स हैं, जिस एक पर्सन ने पेंट किया है, वो कहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं, एग्जिबिट हो रही हैं, राइट। तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, मे बी थिंग्स गेट इजियर फॉर यू। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक सबसे पहली बात टू लगा हुआ है, राइट। सो हम कैसे कहते हैं जनरली, वॉक टू, ब्रिंग टू, राइट। सो वर्ब प्लस टू की फॉर्म यूज होगी, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या है, वी एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस जब तक हमारे कुछ राइट ऑप्शंस नहीं बचते। तो अब हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, वी हैव टू फिल आवर वर्ब। सो वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल अदर थिंग्स, ओके, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कीप वर्ब्स। अब इसमें कम्स हो सकता है, रेंडर्स हो सकता है, पुट या पुल। अब रिमेंबर, रेंडर क्या होता है, किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करना या बनाना। वो बनाएंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे पेंटिंग्स की, द आंसर इज नो। सो वी हैव एलिमिनेटेड रेंडर्स। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, कम्स का। यस, कम्स ऑल्सो मेक सेंस, कम्स टू। अब एक चीज यहाँ पे कम्स क्यों आएगा, राइट। आप तो कहोगे सर यहाँ पे पेंटिंग्स की बात हो रही है, लैंडस्केप्स की बात हो रही है, प्लूरल है, क्या ये ग्रामेटिकल एरर किया पीटी ने, द आंसर इज नो। द थिंग इज, आपको आइडिया नहीं है हाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड वी हैव अ कंप्लीट ग्रामर कोर्स ऑन दिस ऑल्सो। आपका सर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, एग्जिबिट, एन एग्जिबिट है तो सिंगुलर है, तो उसके साथ की वर्ब भी क्या होगी आपकी, सिंगुलर। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी कम्स, ओके। It's not plural, it's singular. So we are going to select it. और वैसे भी put to नहीं सेंस बनता है, pull to कुछ खींच रहे हो नहीं सेंस बनता है, okay? So to the national something of Canada this June. अब एक चीज, अगर ये ब्लैंक आपका बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आप हमारी फॉरवर्ड रीडिंग की स्ट्रैटेजी को यूज करें। यहाँ पे क्या बात हो रही है, नेशनल से रिलेटेड, राइट। द गैलरी, राइट, द गैलरी मतलब यहाँ पे आपने वो गैलरी डिफाइन कर दी।
इन ओटावा। ऑब्वियसली ओटावा है, कनाडा है, मीन्स जिनको पता है दैट ओटावा इज इन कनाडा, तो आपको आइडिया लग रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। और पैरेललिज्म भी देखिए, राइट, अगर यहाँ पे नेशनल वर्ड मैच कर रहा है, नेशनल वर्ड मैच कर रहा है, ऑफ कनाडा की जगह यहाँ पे ऑफ लंदन है, तो आंसर क्या होगा? गैलरी। ओके, so we are simply going to put up gallery over here. And the Philadelphia Museum of Art to something together. अब to something together, अब to लगा हुआ है, together लगा हुआ है, तो यहाँ पे जनरली क्या आएगी? आपकी एक फ्रेजल वर्ब होती है। अब यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। अब आपके पास रेंडर्स है, टू रेंडर्स टुगेदर, वैसे ही बात नहीं बनेगी। अब एक चीज टू के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, टू ईट, टू स्लीप, राइट। तो रेंडर्स में एस लगा हुआ है, क्या यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने अपने ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे रेंडर्स के साथ एस यूज नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब्स हैं और दोनों फ्रेजल वर्ब सेंस बनाती हैं। वन इज टू पुट टुगेदर एंड सेकेंड इज पुल टुगेदर। ओके, सो व्हाट डज put together means? Right, put together, as I said, is a phrasal verb, means कुछ बनाना, make something by assembling parts or people, मतलब लोगों को इकट्ठा करना या किसी पार्ट्स को इकट्ठा करना, राइट। बेसिकली क्या है? फ्रेगमेंटेड चीजें हैं, फ्रेगमेंटेड लोग हैं, उनको इकट्ठा करना। और पुल टुगेदर क्या होता है? एक किसी पर्टिकुलर टास्क में या इवेंट में कॉपरेट करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इवेंट की बात हो रही है। कौन सी इवेंट की? एग्जिबिट की। आप लोगों को थोड़ी इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, या पेंटिंग्स को थोड़ी इकट्ठा कर रहे हो कि जगह जगह से पेंटिंग्स आ रही है, नहीं, आप कॉपरेशन कर रहे हो ताकि वो टास्क पूरा हो सके। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी टू पुल टुगेदर। ओके, द कलेक्शन ऑफ 60 रेनुआ समथिंग फ्रॉम 45 पब्लिक एंड प्राइवेट कलेक्शंस। ओके, अब यहाँ पे 60 समथिंग, ओके, तो 60 है तो क्या यूज होगा? वैसे ही पता है क्या यूज होगा? प्लूरल यूज होगा, राइट। 60 रेनुआ समथिंग फ्रॉम। ओके, सो स्टेट तो यूज नहीं हो सकता, सिंगुलर है, राइट। प्लूरल क्या है हमारे पास? पेंटिंग्स। तो हम यहाँ पे वैसे भी किसकी बात कर रहे हैं? लैंडस्केप्स की, पेंटेड बाय। तो क्या किसकी बात हो रही है? हमारी यहाँ पे पेंटिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पेंटिंग्स। ओके, 60 रेनुआ पेंटिंग्स फ्रॉम 45 पब्लिक एंड प्राइवेट collections. So we are going to select over here paintings. Now let's see if all the answers are correct or not. Yes, all the answers are correct. So I hope this was easy for you because we followed our strategy. Our strategy is based on context, lexical resource and grammar. In context, we do skimming, we do forward reading as well as backward reading, and you had seen the importance of forward reading today, जहाँ पे हमने gallery का आंसर forward reading से find out किया। और जो लास्ट ब्लैंक था पेंटिंग्स, हमें कैसे पता चला? बैकवर्ड रीडिंग से। लैंडस्केप्स की बात हो रही थी, एग्जीबिशन की बात हो रही थी, पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की। ओके, लेक्सिकल रिसोर्स में we have a huge list of collocations which we provide to our students, and phrasal verbs also we had seen today the use of phrasal verb pull together, मतलब इकट्ठा मिला जुल के कॉपरेट करके कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना या टास्क परफॉर्म करना। ओके, vocabulary, obviously vocabulary is something which we build slowly and steadily. And for grammar, this is our complete grammar course where we teach us parts of speech. You had seen their importance today, subject verb agreement also, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules as well as sentence formation. So we teach all this to our students because अगर आपको 84 marks चाहिए या फिर आपको 66 marks चाहिए, it's not going to come easy. Okay, and this grammar is going to help you in reading as well as writing as well as listening, so it's quite important. And always remember, you have 2 or 2.5 minutes to attempt. In first 30 to 60 seconds you are going to skim the content. In the next 90 to 120 seconds you can use process of elimination or your knowledge, tips, tricks and strategies to solve your reading filling the blank. And हम जितनी भी strategies अपने students को बताते हैं, those are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see the scores of students which have achieved their target score, and these are some of our recent success stories where students have scored even a perfect 90 and
86, which is more than 84 in each also, and she has also scored 84 plus each, right? So as per the latest results also, our students achieved their target score, which is 84. So if they can achieve, you can also achieve. So if you have any doubts or questions, do not forget to WhatsApp us for online coaching, for in-institute coaching at 8699 and do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.